को लेके पैशन होना चाहिए, हम्म और सोल्यूशन कोई भी हो सकता है। हम्म सो आवर प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व के सेल्स के बंदे की हेल्प करनी है लीड जनरेशन। ओके। ठीक है। अब आप एक्स वाई जी तरीके से करो, एबीसी तरीके से करो, या 1 2 3 से करो, हम्म। उसके सॉल्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं। तो राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। यू शुड राइट बी राइट। इन लव विद द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। करेक्ट तो करेक्ट। लोग क्या करते हैं ना, उनको प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होती है कि करना है तो क्यों करना है। ओके। बहुत लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं बिकॉज दे सी शार्क टैंक इंडिया एंड दे करेक्ट। वांट टू डू समथिंग, बट दे डोंट नो हम्म व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू और ट्राइंग टू सॉल्व। सॉल्व किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। इसलिए हम्म। आपने देखा होगा शार्क टैंक की पिचेस में एवरी इन्वेस्टर यूजुअली आस्क कि हाउ डिड यू अराइव एट दिस, आपने करेक्ट। क्यों किया। उसके हम्म। उसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि राइट। जब आपको पता होता है ना आपने क्यों किया, तो आप उसको पैशनेटली सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं। We'll quickly start with this podcast, and I would like to. I'm very excited actually to understand the journey because it gives a sense of inspiration, like from where people come and how they do with with the limited resources. So I always refer it whenever I am sending a cold messages on LinkedIn to people. You only have 300 word capacity to send and express yourself, and that's a life I can address and somewhat compare with. Like, you have a limited resource and you have to make it, otherwise you lose it. So that's how it started. We welcome you in the podcast How to Crack, which is basically a theme on like how people are cracking their ventures, their interviews, their fortunes. So we'll start with this. Is my first time that I'm interacting with someone for a podcast. uh, give us an idea about yourself, about your journey, about a little bit about your background, so that we can understand it better and people can learn. So how it started. Well, it will be unfair to say that it started when I started my company, Mm-hmm. because usually it doesn't work that way. Mm-hmm. Some people are, I would say, born entrepreneurs, or maybe some have that kind of spirit in whatever they do that leads them eventually to being a founder of a company. Mm-hmm. So, early school days, I had this huge fanboy crush on Dexter Laboratories. So Okay. that cartoon character. So, Mm-hmm. I was so inspired by Dexter that I also had a small lab in my home. Okay. It's Okay. obviously not a bad, basement, a huge infrastructure that they show in Dexter Labs. Mm-hmm. But to me as a child, it was that kind of fantasy. So I had that lab in my place wherein I used to do soldering of electronic items and products and capacitors and everything. I used to create stuff. And Diodes. yeah, sorry. That used to be diodes on the semiconductor Yes, boards. Yeah. yes. Semiconductor, Remember. PCBs, and everything. I used to do all Mm-hmm. of that. I created geyser, I created inverter, I created on off switch, clamp, all of these little things. I used to do that, and then I show it to my school, present it in the science fair projects, and then got published in some newspapers back then. So that was kind of fun way of having the seed of entrepreneurship at that time. Mm-hmm. And but then I joined corporate after doing my BTech mechanical engineering from YMCA University, and then I started working as a robotics engineer and a salesperson, Mm-hmm. where we were deploying robots in manufacturing plants. So Okay. all the companies, Maruti, Honda, they were obviously using robots for large scale manufacturing. So my job was to go there, understand everything about their plant, everything Mm-hmm. about their production process, and then see whether we can replace or automate their production line or not. That is what I was doing, designing the whole production line for large scale manufacturers. And I've done projects up to 350 robots in one single line. Mm-hmm. And that was the kind of scale of automation and robotics or programming that I was doing at that time. And so one of the key incident that I would say I had in mind is wherein so we didn't had any sales in north of India. All of the Mm-hmm. robots
that we had were in west of India. So, Okay. but I was selling robots in north. So we didn't had anything to show to customers because it's not a small investment for a manufacturing company. Mhm. So they wanted to see the robots in action, but Mhm. we didn't have it. So that was one of the biggest barrier that we had. And how I overcame is I used the software to create a simulation of their entire plant. Okay. 3D simulation, so as to say, on how the robot will look like, how the production will look like, for them Mhm. to at least visualize. That Okay. is how I was able to crack the first sale without showing them the physical aspect of it, but at least showing them something. Okay. So that's how it kick-started the journey in north of India, and then obviously sky is the limit. We were able to reach Hmm. 50 crores of turnover through one reference and multiply it with multiple references. Then we had a lot of potential opportunities to showcase in north of India. Hmm. Then I joined IIT Delhi to do my master's marketing and operations MBA. I did it from there. The only reason I chose IIT Delhi was to take a break from my job. Mhm. I was very clear I'm not going to IIT for a job or a placement after all. I wanted to go to a college which had entrepreneurship spirit. Mhm. Um, because Flipkart, Snapdeal, Zomato, when I did my MBA in 2013 to 15, all of these companies were booming up. They were coming out. Mhm. Flipkart was basically rising up in 2013-15. So I thought to go to that college where all these entrepreneurs are hanging out or building their companies. So that's why I chose IIT Delhi. वहाँ गया, I started, contemplating what I can do now. So in the second year, I started my first company. It was called Get My Looks, Okay. and very similar to what Urban Clap is doing now, but way before Okay. Urban Clap. Okay. So we got good traction. A lot of investors committed to invest, but an unfortunate moment happened. Uh, you may have heard of a story of a rape case that happened in 2015 Uber car. Mhm. It was a very famous case. It led to Mhm. parliament also, wherein all companies were into scrutiny. All MPs and MLAs were discussing how can we allow all these companies to run. There is a lot of security flaw. So all the Correct. investors backed out at last minute, thinking they also have a kind of a security flaw, wherein if a freelancer goes to a customer place, Mhm. there could be anything that can happen at that time. So we were also obviously kids or college going people. So हमने हमने सोचा यार जब उबर नहीं संभाल पाया तो हम क्या करेंगे. Mhm. उसके पास $1 million पैसा है, वो नहीं हैंडल कर पाया तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसके आगे. तो we thought Mhm. ठीक है इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, and we shut it. And now Urban Clap is obviously everyone knows. Correct. So then I started again. After a few weeks, I started another company called as Sponsify Me, Mhm. where we're connecting brand managers with event managers for raising sponsorships. Okay. So you are an event, you can post it online on our platform, and on the other side, there are a lot of brands who might want to invest in those events, have their brand integrated with those events. So we were bridging that gap, like Mhm. Shadi.com, but for brands. Shadi.com. And Okay. uh, we were able to scale it. We got almost 300 brands on board in 1 year. We got even IFA awards to be a part of that platform. But unfortunately, the things were that it was becoming more of an agency, Okay. a marketing agency rather than a tech company. And I was Correct. always fascinated in building a product that can be scaled to masses Correct. Correct. rather than a service company. Hmm. बिकॉज उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, उसमें कुछ स्केलेबिलिटी मुश्किल लग रही थी. Hmm. सो फिर वन फाइन डे मी एंड माय को-फाउंडर वी वर डिस्कसिंग कि चलो यार अब करना तो यही है, अब क्या कर सकते हैं एक अब डेटा कहाँ से लाए, मार्केटिंग वालों को रीच आउट करने का कैसे डेटा निकालें. Correct. So we have together an app. We built an app without any intention to build that app as such. We created an app called Easy Leads. We Okay. launched it in Facebook group जहाँ पे the idea was कि आप अपने contact contribute कर दो, आपको return में उतने ही number of credits मिल जाएंगे जो आप use कर सकते हो Okay. centralized platform से और data निकालने के लिए. So it Okay. was like a crowdsourcing model for contacts. Okay. So we launched it. We got almost 1,000 users in 7 days without doing any marketing. We Hmm. got 3.5 lakh contacts in just 7 days. फिर हमें लगा यार तो कुछ अलग ही बम फोड़ दिया हमने, कुछ तो कर दिया. Hmm. मतलब ये 1,000 यूजर हमारे एक हफ्ते में आ गए. Hmm. मतलब That's दिस a big thing.
Yeah, it's an even bigger problem. I think every company has the problem of sales and data. That is how Easy Leads started. Without Okay. intentionally starting Easy Leads, we created Easy Leads. Okay. And my background has always been into sales. So sales का background था ही, sales की समझ थी. I hope you're comfortable in mix of Hindi and English, right? Yes, 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 of course, of course. तो वो बैकग्राउंड था ही शुरू से कि यार अब सेल्स तो है, सेल्स की हुई है हमेशा से ही, और लीड्स की प्रॉब्लम उसमें भी रहती थी, अब ये हमने जो बना दिया है चलो इसी पे काम करते हैं. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. एंड उसमें भी लेकिन आसान जर्नी नहीं थी. टुक अस 3.5 years टू इवन कम टू अ प्रोडक्ट दैट एक्चुअली वर्क्स. Correct. We created multiple products. कुछ यूएस सेंट्रिक प्रोडक्ट थे. वी गॉट इनटू वाई कॉम्बिनेटर. उन्होंने भी हमें फीडबैक दिया कि यार आपका प्रोडक्ट यूएस के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है. Okay. बट हमें इंडिया के लिए ज्यादा मतलब प्यार लगा लो, कुछ भी बोल लो, कि हमें इंडिया के लिए कुछ करना था रादर देन Hmm. फॉर द यूएस मार्केट. बिकॉज हमें लगा Hmm. यार इंडिया में बैठ के यूएस के लिए क्या बनाना, इंडिया के लिए कुछ करते हैं. Right, तो right. दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि नहीं यार रहने देते हैं, अभी कुछ ऐसा बनाते हैं जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम Hmm. है, विच इज कनेक्टिंग पीपल ऑन फोन कॉल्स. बिकॉज कल्चरली अगर आप देखोगे तो इंडिया रन्स ऑन फोन. Right, डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस, यूके, दे एसेंशियली वर्क ऑन. वहां पे correct, मैसेज करना, स्लैक और ये सारी चीजें बहुत चलती हैं, शॉर्ट फॉर्म right, कम्युनिकेशन, क्योंकि दे आर वेरी right, फास्ट इन डिसीजन मेकिंग. यू कैन right, पिच right. देम 100 million, $100,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑन ईमेल एंड थिंग्स कैन बी डिसाइडेड ओवर ईमेल. Yeah, तो he'll either say इंडिया yes or में तो, no. हाँ इंडिया में तो हजार हजार रुपए के लिए भी आपको फोन पे बात करनी पड़ती है. Right, तो right. वी थॉट कि यार इंडिया के लिए कुछ बनाना चाहिए. सो दैट्स हाउ वी क्रिएटेड इजी लीड्स मिस्टर ई क्रोम टूल, Okay. जो अभी हमारा चल रहा है. वी लॉन्च्ड इट इन 2020 January, just right before COVID happened. And in Hmm. the last 2.5 years, we got almost 1.5 lakh businesses who are using our product now without Massive. investing any money on marketing whatsoever. कोई Hmm. हमने आज तक marketing के ऊपर एक भी खर्चा नहीं किया है. It is just through SEO, just through the content that I create, and through word of mouth. Very solid product. Every company that signs up usually bring in 5 to 6 people in their own company to try out the product without me pushing them to do it. Hmm. So that's the journey essentially. That was quite inspiring to understand. I've seen that like I wanted to understand this transitions that like you started a company within a week you started another company, and if I sum up this, तीन startup थे, तीसरा startup है Easy Leads. Like वो moment कैसा होता है when you fail at something, or let's say you shut something, how that experience was it like immature that we were in a phase of learning, let's go for the next, or how's that feeling to shut up a thing and go for the next thing, how that transition take place, and how that feeling is, how a person who can no is who is actually in the situation to give up for a thing, a product or service based company, and start something of it, how you will explain that transition, that actually your experiences. यार मतलब सिंपल सी बात है. यू हैव टू बी, अगर आप फाउंडर या एंटरप्रेन्योरशिप इस फील्ड में जा रहे हो तो यू कांट बी देयर फॉर अ शॉर्ट हॉल. सबसे पहले तो आपको, अगर आप यही सोच के चल रहे हो कि यार 1 साल करूंगा, बैकअप प्लान है, जॉब कर लूंगा, Hmm. मेरे को लगता है कि मतलब मैं तो उस तरीके से नहीं काम कर सकता. आई हैव टू हैव अ फीलिंग दैट आई एम देयर टू क्रिएट समथिंग. इवेंचुअली दुनिया में आए तो कुछ तो करोगे ना यार. Right, right, मतलब right. कुछ तो करना है. मतलब यू हैव टू हैव समथिंग दैट यू केयर एंड लव. You're सो right. इट्स लाइक दैट. वो ट्रांजिशन ना अपने आप आ जाता है जब आप, व्हेन यू केयर दैट यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, यू वांट टू बिल्ड समथिंग. क्योंकि मैं Correct. शुरू से इस जोन में था बचपन से, दैट आई कीप ऑन क्रिएटिंग. Creating something. वो बचपन से आदत थी कि कुछ ना कुछ छोटा छोटा बनाते रहो, कोई बात नहीं अगला बना लेंगे, नहीं चला तो वो Hmm. कभी भी नहीं हुआ कि यार बनाना तो छोड़ना ही नहीं है ना. Hmm. तो वो Correct. वो कभी भी माइंड में है ही नहीं कि बनाना छोड़ना भी है. आज भी अगर Okay. अनफॉर्चुनेटली अगर गॉड ऐसा कुछ हो जाए कि इजी लीड्स बंद हो जाए Hmm. फॉर एनी रीजन, आई डोंट थिंक सो आई एवर थॉट कि मैं जॉब में चला जाता हूँ. आई फाइंड समथिंग एल्स टू बिल्ड. सो वो Hmm. बिल्डिंग और क्रिएशन का जो मजा है, वो प्रोसेस का जो प्यार है ना, वो अलग ही है. लाइक Hmm. you can't match it with doing a monotonous job every day. Hmm. क्योंकि Hmm. इसके जो ups and downs होते हैं, they that keep you sane and insane at the same time. Correct. Like the Correct. high you get every time you create something and people resonating it with. बहुत छोटे से incidents है. If I create a post on LinkedIn, and I get
100 people engaging with it. Even these things give me high. I mean, usually agrees with it कि नहीं हम लाइक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम कमेंट्स के ऊपर सब कोई भागते हैं सब, और क्या चाहिए, आप क्यों बना रहे हो कंटेंट? अगर आप content create कर रहे हो, eventually you want people to consume it, right? What's the point of creating? You want people more and more people to use it, to consume it, to engage with it, to share, to like. At the end तो यही गोल है ना कि जो आपने लिखा, जो ज्ञान बांटा, वो 10 लोग देखें, 10 लोग आगे लोगों को बताएं. सेम चीज प्रोडक्ट के अंदर है. When you create something, people use it, even if it's a single review on a Chrome store or a message in a DM sending के यार मजा आ गया आपका प्रोडक्ट यूज करके. वो जो ट्रांजिशन है ना, वो अपने आप आती है फिर के. अभी we don't give up on building. Even today we were discussing about building a new product within the product suites of Easy Leads. तो ऐसा नहीं कि अभी चल गया तो रुक गए, अब तो आ रहा है, रेवेन्यू बढ़िया हो रहा है, रोक दो, अब क्या करना है. We still have that mentality of create something else, create something new, create. अभी अगर 1000 लोग यूज कर रहे हैं, how can we do something that can amplify it and solve the problem for 10,000 people? जब 10,000 हो जाएंगे तो think about 1 lakh and so on. Correct. So if I have to ask you one thing, in a way, मान लीजिए कि एक सेल्स का बंदा है जो ये इंटरव्यू देख रहा है, या मार्केटिंग, because you come from a tech background or let's say product background, you made softwares, you made things earlier. अगर ये पूछा जाए in a simple way, if you have to define or make understand people, like what is exactly Easy Leads, how can you simplify, say it in a way that is a very feasible way to explain what is the software you are working on, you have created, and what is it is? तो सिंपल भाषा में तो ये डायरेक्टरी है, इजी लीड्स. ठीक है. Okay. आपको दुनिया में किसी को भी रीच आउट करना है, आपको उसका नंबर चाहिए. आपके साथ वो बंदा ना जान ना पहचान ना कनेक्शन, आप हमारा टूल यूज करो, सीधा सीधा जाओ, उसका नंबर निकालो और उसको कॉल करो. इन सिंपल वर्ड्स, इट इज दिस. This is what you are actually. This is, we are connecting people with each other through phone calls. Okay. We are helping them reach out to other people through phone calls. That is what the agenda is. But उसके ऊपर there are multiple things that we do. We have automations, we have WhatsApp integration, we have dashboard where you can prospect, filter companies. वो तो देखो layers हैं software की. That amplify and improve the efficiency of the process that you do. But eventually end goal क्या है आपका? सामने वाले को reach out करना. Sales का बंदे को क्या करना है? जहाँ उसको सामान बेचना है, उस कंपनी में वो reach out कर ले, बस उसको यही चाहिए. इनरोड चाहिए, हम तो इनरोड देते हैं उसको. Correct. There is one important question which actually, I also try to solve every day. So, what do you think as a founder, as a company, you're leading a venture, challenges, like how you see challenges, and everyday basis, I feel, as a founder, you can't sit. Let's say your company is doing well, then also you have challenges. What I believe actually, because if you are leading a team, let's say a 5-people team also, they depend on your decision and your vision. How you see challenges in the founder's journey and how you actually tackle it, if I have to ask you. Sure. So, अर्ली डेज के चैलेंजेस अलग होते हैं और जब आप थोड़े स्टेबल हो जाते हैं उसके चैलेंजेस अलग होते हैं. अभी when we were early stage, we didn't have revenue for 3 years, 3.5 years, zero revenue, zero salary. घर पे झूठ और बोल रखा था कि हाँ आईआईटी से निकले हैं तो अच्छे अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं, ऊपर से होम लोन की ईएमआई अलग चलती है. सो 50-60,000 रुपीज का तो खर्चा आपका मिनिमम था. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. Right. And family was expecting कि 1-2 लाख तो महीने का कमाता ही है because he's working anyway. So एक तो नेगेटिव और ऊपर से होप अलग के. और मुझे याद है अच्छे से कि मैंने 3 साल एक भी शर्ट नहीं खरीदी, एक भी जीन्स नहीं खरीदी, बिकॉज, और मेरे घर वालों को इस पे ज्यादा शक होता था कि यार 3 साल में तूने एक भी कपड़ा नहीं खरीदा, सीन क्या है? बिकॉज दे डोंट नो कि ये तो कमा ही नहीं रहा, पैसे कहाँ से आएंगे इसके पास खरीदने के लिए. सो आई हैव टू स्लीप one night at stairs because मेरे को लैंडलॉर्ड ने किक आउट कर दिया था. there was no rent that I had paid for the last 3 months. तो वो मुझे रोज बोलता था यार आज दे दे. मैं उसको बोलता था आज शाम को अरेंज करता हूँ, आज अरेंज करता हूँ. और एक दिन मैं शाम को पहुंचा तो उसने मेरा सारा सामान बाहर रखा हुआ था, लॉक करके चला गया और मेरे को फोन किया कि तेरा सामान बाहर फेंक दिया मैंने, उठा के चल जाना. तो आई स्लेप्ट ऑन द सेम स्टेयर्स, फर्स्ट फ्लोर पे घर था. फिर माय फ्रेंड्स गॉट टू नो अबाउट इट कि ऐसे ऐसे, बिकॉज माय को फाउंडर इज आल्सो माय बैचमेट. सो
obviously we have certain common connections, तो उसने मुझे बाकी दोस्तों को बताया कि ऐसे ऐसे उसके साथ ये हुआ रात को, हम्म he had हम्म picked out. So my हम्म friends invited me to stay with them for few months, and वो फिर 4 साल में कन्वर्ट हो गया कि 4 साल उनके साथ रहा फिर फाइनली. बट so they generously offered me कि यार आप अपने हिसाब से जो कर रहा है तो करता रहे, we are there to support you, will not ask you for any rent, no money to food के ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा, तू बस यहाँ रहे और अपने आप को स्टेबल कर. सो जर्नी स्ट्रगल्स बहुत हैं. मतलब मुझे याद है क्रेडिट कार्ड पे मैंने खर्चा किया था 20-30 हज़ार का. आई वॉज नॉट एबल टू पे दी क्रेडिट कार्ड फी. हम्म और 2-3 महीने से वो पेंडिंग थी और वो घर पे रेड मारने चले गए क्रेडिट कार्ड वाले. और हम्म मैं यहाँ हूँ गुड़गांव में और मेरा घर करनाल में है, माई होम टाउन इज करनाल. सो हम्म वो करनाल पहुंच गए. अब वो घर पे आके वो धमका रहे हैं मम्मी को अच्छा कि ऐसे ऐसे पैसे दो. सो माई हम्म मॉम वाज ऑब्वियसली स्केयर्ड एंड उनको लगा ये क्या कुछ गलत फहमी हो गई है क्या, क्योंकि वो तो अच्छे हम्म खासे पैसे कमा रहा है. तो मतलब ओके ये कैसे हो सकता है कि उसने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं किया. फिर मैंने उस बंदे को फोन किया, मैंने कहा यार तू अभी घर से बाहर जा, हम्म मैं तेरे को अलग से सेटल कराता हूँ, तू बट घर से निकल जा, अभी घर पे सीन हम्म मत क्रिएट. हम्म So then I asked someone to give me some money and then I paid over the credit card. तो ये सारे स्ट्रगल्स जो है ना, ये अगर आप इससे डर रहे हो हम्म तो बहुत मुश्किल है आपका स्टार्टअप जर्नी के अंदर सरवाइव करना. तो ओके आई फील दैट यू हैव टू बी रेजिलियंस एट ऑल टाइम्स. और इस मोमेंट ना, ये बहुत आसान मोमेंट है किसी के लिए भी गिव अप करना. राइट राइट I got a job in F6S, which is a community of startups in entire world. I was the हम्म country head for them in India, हम्म and obviously I was being paid a lot of money. मैं क्या करता था कि मैं वही पैसा जो आता था वही मैं अपने स्टार्टअप को दे देता था, जो मेरे हम्म को वहां से आता था कि आप लोग की सैलरी तो निकल जाएगी इससे, चलो मैं तो हम्म देख लूंगा. So हम्म that is how we survived for the first 3-4 years without having any money. एंड अब जितना आ रहा है वो इतना है कि इट कवर्ड द एंटायर मनी दैट वी हम्म नॉट एबल टू हम्म अर्न इन द लास्ट फ्यू हम्म इयर्स. तो ये टफ टाइम्स में अगर आप सरवाइव कर गए ना, तो उसके बाद की जो जर्नी है वो इतनी आसान है. ये चैलेंजेस थे ये अर्ली डेज के. आई थिंक अब जो आपके चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं कि हाउ टू हायर द राइट पीपल हु ओके ऑल्सो हैव द सेम विजन अलाइंड विद यू. बिकॉज एग्जैक्टली बहुत लोग होते हैं कि जॉब करने आते हैं और वो बस करके चले जाते हैं 9 to 5 राइट मेंटालिटी. राइट राइट In the initial 20-30 people, you need to have people who also align with the vision, ओके why they want to be a part of it, and we give them full authority. मतलब हमारी सेल्स में एक ही बंदा है अभी, and he has full authority to take decisions. हम लोग रिपोर्टिंग तक नहीं लेते, हमें पता भी नहीं होता कि किस कस्टमर से क्या बात की उसने. वी हम्म हैव नो आइडिया लिटरली. आज भी अगर मैं बोलूं मेरे सुबह से उससे शाम तक अभी बात नहीं हुई है कि उसने किससे कॉल की, क्या कॉल की, किसको बेच भी रहा है नहीं बेच रहा है. बिकॉज वी हम्म ट्रस्ट, गिव देम हम्म फुल अथॉरिटी टू डिसाइड. बिकॉज वी नो कि यार अगर आपने एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो ट्रस्ट देम एंड प्रमोट देम. इफ दे डू वेल, एंड दिस गाय हैज बीन प्रमोटेड थ्राइस इन 1 year. जिस हम्म सैलरी पे वो आया था उसकी 3 गुना सैलरी है उसकी 9 महीने के अंदर अंदर. हम्म So we empower people, we give them full authority, full autonomy to take decisions, and we promote very fast. ओके ये सो चैलेंज हैं जो So as a founder, you would like to highlight at the stage where you are doing a business and you are actually in a mode that you are getting a good revenue in order to. So hiring right people is the challenge. If I have to ask you, this is my personal question, which I want to ask you. Like, if you remember any most difficult part of this entire journey of from starting from a startup to in right now till the date, what is that one incident that you would like to share with, like, which was uh, a difficult part? Because now the motto of this conversation is like, I see a lot of people actually have very minor problems, but they actually feel it like this is the biggest problem I have, and they do not have an idea that people are also suffering from x 100x difficult situations. And probably this, share us, like, if you had any such situation you've been through, so that yeah, people can yeah, understand. many actually, but one of the more prominent is कि so मेरा टेक को फाउंडर है, सीटीओ. Mhm. एंड उसके घर पे प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत Okay. मेजर प्रॉब्लम हो गई. Mhm. और उसका इतना बड़ा क्राइसिस हो गया था कि दैट ही हैड टू इंस्टेंटली गो
एकदम से, मतलब बिना बताए, बिना कुछ बात हुए वो एकदम चला गया। ओके। और वो इतना फंस गया था कि हमारी 1.5-2 महीने उससे बात ही नहीं हो पाई। ओके। एंड टेरिबल। वी इवन नो कि यार हमारी टेक कंपनी है, टेक प्रोडक्ट है, और राइट। सीटीओ ही गए, ओके। तो करें क्या, बनाएगा कौन प्रोडक्ट। सही है। चलो, आई एम मोर ऑफ एल्गोरिदम गाय, आई एम मोर ऑफ अ प्रोडक्ट गाय, आई वाज नॉट कोडिंग, आई वाज ओके। नॉट डेवलपिंग द एप्लीकेशन, दैट हम्म। पार्ट वाज द जॉब ऑफ द सीटीओ और द टेक को-फाउंडर दैट वी हैड। हम्म। एंड कोडिंग करने वाला ही नहीं है तो कोड ड्रिवन कंपनी बनेगी कैसे, है ना। करेक्ट। तो और जब दिख रहा था कि कुछ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा वो है कहाँ पे, बात ही नहीं हो पा रही उससे, तो आई इवेंचुअली डिसाइडेड टू डू कोडिंग माई सेल्फ। ओके। तो एट द एज ऑफ 29 or 30 आई लर्न कोडिंग ऑन माई ओके। ओन। ओके। मैं सुबह सुबह 6 बजे तक कोडिंग सीखता था, रात हम्म। भर जागता था, कोडिंग सीखता था। हम्म। एंड आई क्रिएटेड all the codes and algorithm on my own, and हम्म। eventually Amit came back, और हम्म। जब वो आया, all the codes were, most of them were ready, and हम्म। we just plugged in together everything and combined them and then launched the product. तो हम्म। मतलब लोगों को ना ये लगता है कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास रनवे नहीं है, या करेक्ट। कोडर तो है नहीं तो मैं कैसे करूंगा। अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप चाहते हो जेन्युइनली वो चीज करना, तो आपको एक ही रीजन चाहिए वो करने के लिए। अगर राइट। आप राइट। नहीं चाहते तो आप 100 रीजन ढूंढ लोगे उसको ना करने के। ओके। ओके। सो आई रेड योर पोस्ट अभी रिसेंटली, मैंने लाइक फॉलो करा, तो मुझे वो बहुत यू नो I just got stopped at that post. Like you said, how you launched, how you actually had Microsoft as your client, and eventually share us something, that story that we can be vocal of, how that happened. In fact, I read that post, but let us everybody know how, incident like this can also happen. So people have to just, keep going and just believe that things will be on a place. Share it with us, like how that happened. राइट। तो अब सीन क्या हुआ था कि दैट वी ऑब्वियसली एज आई सेड कि वी डिडंट हैड एनी मनी, कोई रेवेन्यू Hmm. नहीं आ रहा था, कोई Hmm. प्रोजेक्ट्स नहीं थे हाथ में, हम Hmm. बनाए जा रहे थे, बस बनाए जा रहे थे। Hmm. प्रोजेक्ट के नाम पे ये होता था, किसी ने 10,000 दे दिए इस महीने, किसी ने 20,000 दे दिए। अब Hmm. 10,000 आ गए, वो 2-3 हजार मैंने रख लिए, 2-3 हजार पार्टनर ने रख लिए, बस उससे खर्चा पानी निकल गया और हो गया, बट दैट इज Hmm. नॉट द रेवेन्यू। उससे क्या होगा, Correct. कितने टाइम, और वो Right. दो Right. तीन साल ऐसे चल रहा। But I was very good in building relationships, or fortunately, I found people who, were supporting. So Okay. I was hanging out at a friend's place. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, he is also very good in building communities. तो उसका फ्रेंड था जो कॉमन कनेक्शन था, and he was working in Microsoft, Hmm. and that guy was responsible for marketing in Microsoft. Okay. एंड रात 2-3 बजे की बात है, वी वर हैंगिंग आउट, और वी वर हाई, बोथ ऑफ अस आर हाई, एंड हम बैठ के अपना चिल कर रहे हैं, और फूक फूक रहे हैं बैठ के, आराम से बातें बातें चल रही हैं। और इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज, वो मेरे को बोला यार तू करता क्या है, तो मैंने उसको बताया यार ऐसे ऐसे डेटा कंपनी है, एंड वी प्रोवाइड हाई क्वालिटी डेटा, थोड़ा बहुत उसको एक दो लाइन में बोला। तो बोलता है अच्छा तो बता, हमें तो डेटा चाहिए होता है। तो ऐसे Hmm. कि तो बताओ क्या करना है। तो बोलता ठीक है, एक काम कर, मुझे मेल कर दे, मैं तेरे को प्रोजेक्ट करवा दूंगा। तो Hmm. द वेरी नेक्स्ट डे आई सेंट हिम एन ईमेल, एंड द नेक्स्ट डे 2 people from Microsoft invited me to do a presentation, and the reference was obviously very solid क्योंकि उस बंदे ने रिकमेंड किया था, Hmm. एंड got a project of 5 lakh rupees। Okay. एंड Great. कहाँ 5,000 10,000 की बात हो रही थी, सीधा 5 लाख का एक प्रोजेक्ट आ गया हाथ में। Hmm. उस प्रोजेक्ट ने हमारी जर्नी को किक स्टार्ट किया, Hmm. दैट सर्वाइव्ड, और उसको करने में भी जो हमारी हालत खराब हुई थी, बिकॉज Right. आई Right. हैड ऑल्सो, एवरीथिंग वाज मैनुअल, देयर वाज नो ऑटोमेशन विद अस, देयर वाज नो प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करते थे, उन्होंने हमें लिस्ट पकड़ाई कि यार ये 10,000 कंपनीज है, इनका डेटा चाहिए। ओके, Okay. अब और हम रात रात भर में खुद, मेरी पार्टनर, एक इंटर्न बिठाया था हमने, हम तीनों लोग बैठ के सुबह के 6 बजे तक वो एक एक कंपनी को रिसर्च करते थे मैनुअली जाके कि इस कंपनी में कौन Amazing. बंदा काम करता है, उस Amazing. कंपनी के अंदर कौन बंदा है, उसका ईमेल आईडी ढूंढते थे, उसका नंबर निकालते थे, पूरी एक्सेल बनाते थे। वो 1-1.5 महीना हमने रात रात 6-6 बजे तक काम किया और प्रोजेक्ट डिलीवर किया। सिंस वो हाथों से मोती पिरो के
डेटा निकाला था तो डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, Right. and that landed us more projects with Microsoft. Then Microsoft referred us to their partners. उनके पार्टनर के थ्रू डेटा प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए, तो दैट kept us going for few more months, and Hmm. eventually then we built few products, and eventually Mr.E tool, the Chrome extension happened. So, like, jab Microsoft, when you were hanging out a place, like, was it an intention? Like, I have personally felt that, when you just decide कि अब कुछ नहीं हो सकता, like, and that is a moment you have tried everything, and उसके बाद आपने सोचा कि चलो, let's just leave it everything and look for the things, and eventually, suddenly ऐसा कुछ होता है जो आपने expect नहीं किया था. Was this your expectation, experience at that time? कि अब कुछ So समझ में नहीं आ रहा है, you had everything tried. वो तो यार एंटरप्रेन्योर के माइंड में सुबह शाम चलता है। सुबह उसको लगता है कि आज तो सब कुछ हो जाएगा, दोपहर को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, शाम को लगता है तो Exactly. अपनी भगवान है Exactly. टाइप की फीलिंग आ जाती है। वो तो सारा दिन होता है, अभी भी यही होता है। बट Right. उस टाइम पे जब मैं था उसके प्लेस पे, द इंटेंशन वाज नॉट टू पिच। आई वाज नॉट इवन अवेयर कि यार ये माइक्रोसॉफ्ट में ये बंदा है या ऐसे ऐसे। मेरे को Hmm. था ये दोस्त है उसका, मैं उसके साथ बैठा हूँ, वो मेरे साथ बैठा है, बस बातें कर रहे हैं बस। देयर Hmm. वाज नो इंटेंशन टू पिच। उसने बताया कि वो माइक्रोसॉफ्ट में है, मैंने उसको बताया कि मैं ये करता है, वो लकीली इट हैपेंड। इट वाज नो कि मैं प्लान करके गया था कि वहां पे माइक्रोसॉफ्ट का बंदा आ रहा है, मैं उसके Hmm. पास। इट Hmm. वाज नॉट अ पार्टी। Hmm. पांच छह लोग थे घर पे बैठे हैं, बस बातें कर रहे थे, बस नथिंग लाइक अ पार्टी और एज सच, बस वी वर Hmm. हैंगिंग आउट, दैट्स। क्योंकि Can shoot this question to understand. If there are people who want to switch, start a company, or let's say thinking of starting something by their own at any stage, at at any stage, how would you like? What are the key pointers and takeaway that you would like to address them? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द व्हाई, अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू वांट टू स्टार्ट अ Mm-hmm. कंपनी। बिकॉज Mm-hmm. आपको अगर ये पता है, ये क्लियर है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ ये, और Mm-hmm. जस्ट नॉट बिकॉज कि एवरीबडी एल्स इज डूइंग, Mm. then it makes a huge difference. You have Correct. to have some clarity that why you want to do it. Mm. And the second part is the problem that you're trying to Mm-hmm. solve. Mm-hmm. Normally, आज भी मैं किसी से मिला था, he is a senior bureaucrat in government and he wants Mm-hmm. to get into IT sector. He wants to start his own company. Mm. And although normally a lot of people, in front of bureaucrat, they behave diplomatically. Correct. Correct. बट मैंने Correct. Correct. बहुत उनको अपफ्रंट यही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा करनी क्यों है, पर आप बताओ मुझे क्यों करनी है। आर यू लाइक इन लव विद द बिजनेस और आर यू इन लव विद द प्रॉब्लम? Mm. तो ही वाज आल्सो ऑब्वियसली ऑफ द डिफरेंट ओपिनियन कि नहीं मुझे करना है। तो मतलब प्रॉब्लम वही है कि करना है, बट क्यों करना है वो बहुत कम लोगों को क्लियर Okay. है। एंड फिर मैंने उनको बोला ठीक है आपको करना है तो करो, बट यू यू हैव एन एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो Mm. व्हाई डोंट यू डू समथिंग दैट क्रिएट्स अ प्रोडक्ट आउट ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू ऑलरेडी हैव। तो Mm. अगर आपको गवर्नमेंट में इतने टाइम से आप काम कर रहे हो, 20-25 साल आपने इतने हाई लेवल पोजीशन पे काम किया है, यू डायरेक्टली रिपोर्ट टू सीएम ऑफ द स्टेट, तो Mm. आप जब इस लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको तो ग्रास रूट चैलेंजेस पता है ना, इंडिया के Mm. इकोनॉमी के, Mm. इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो बिल्ड समथिंग यूजिंग दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एंड देन यू विल हैव बेटर एक्सपोजर एंड बेटर नॉलेज कि आपको प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है और क्यों सॉल्व करनी है। तो Mm. लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव द क्लैरिटी कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है। तो आई थिंक Mm. इफ दे हैव दैट क्लैरिटी कि Mm. प्रॉब्लम जो मुझे पता है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ऑन हाउ Mm. मेनी पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, कि कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सेम प्रॉब्लम आती है, Mm. देन यू हैव अ नंबर आल्सो इन माइंड कि हाँ अगर मैं ये बनाता हूँ तो वेदर माय टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज इज ह्यूज इनफ, मार्केट साइज बड़ा भी है या बस 10-5 लोगों को प्रॉब्लम है ये। Mm. सो द थर्ड प्रॉब्लम पार्ट इज दैट अंडरस्टैंडिंग वेदर लॉट ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम और नॉट। Mm. सो उसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हैव गुड पीपल Mm. सपोर्टिंग यू, बैकिंग, Mm. स्पेशली दी फाउंडर्स। आपके Mm. साथ उनका एक इमोशनल कनेक्ट होना Mm. बहुत जरूरी है। Mm. लॉन्ग होल के लिए होने चाहिए वो, दे शुड Mm. ऑल्सो बी अलाइनिंग विद द विजन दैट यू हैव। Mm. एंड फिफ्थ इज रेजिलियंस, हाउ टफ योर कैरेक्टर इज। Mm. आप कितनी जल्दी गिव अप करते हो, अगर आपका स्टार्ट करने से पहले एक बैकअप प्लान है तो इट्स Mm. हाईली अनलाइकली कि आप लॉन्ग रन में करवा करवा पाओगे। आपने बैकअप पहले ही बनाया हुआ है कि मैं 6 महीने Mm. करूंगा बस हो जाएगा, ठीक है। Mm. स्टार्टअप जनरली आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। Mm. तो वो अगर आप अनप्रिडिक्टेबल के होके भी, अनसर्टनिटी में रह के भी काम कर सकते हो, Mm. बिकॉज कॉर्पोरेट कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड प्रोसेसेस होते हैं।
Startups में there are no defined processes. करेक्ट Even करेक्ट today we hired someone for key account management role. हम्म और कल मैंने उनको बोला कि हमने एक फ्रेश सेल्स पर्सन को हायर किया है, तो क्या तुम 5 मिनट एचआर का इंटरव्यू ले लोगे? तो शी वाज सरप्राइज्ड कि यार मैं की अकाउंट मैनेजर हूँ और मेरे को एचआर का इंटरव्यू लेना है। तो मैंने कहा स्टार्टअप ये होता है यार। तो मतलब इसमें सरप्राइज क्या? दिस इज व्हाट यू राइट गेट। राइट राइट Like, राइट so you have to play multiple roles and have people who are open and comfortable in an uncertain environment. तो ये करेक्ट 5-6 चीजें हैं जो I think if people think about it and have that in mind before they start, then there are high chances obviously of success. And timing तो बहुत important part play करता ही है। करेक्ट आप किस टाइम एंटर कर रहे हो? We created a product long back which was हम्म not apt for the Indian market. अगर वो हम्म सेम प्रोडक्ट आज मैं लेके आऊंगा तो वो हो सकता है बहुत अच्छे से चल जाए। हम्म एक एक लास्ट क्वेश्चन जो इस तरह है दैट आई ऑल्सो वांटेड टू नो दिस एज अ फाउंडर। हम एक ऐसे स्टेज में होते हैं जहां आपने 6 महीना काम कर लिया, साल भर काम कर लिया, एंड यू आर नॉट गेटिंग रेवेन्यू रिजल्ट या फिर जो आउटकम आपको चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बंदा है, जो लोग हैं, हाउ वुड यू लाइक टू सजेस्ट देम कि क्या करना चाहिए, हाउ द नेक्स्ट स्टेप शुड बी? क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन। जैसे आपने बताया कि उनको वाई नहीं पता है शायद से, या उनको पता भी है, बट वी ऑल कम एट अ सिचुएशन कि दे आर नॉट अप टू द मार्क, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस नहीं बन रही हैं, या फिर चीजें नहीं समझ में आ रही है। एट दैट स्टेज क्या लगता है आपको कि कैसे बिहेव करना चाहिए, एंड व्हाट आर द स्टेप्स दे शुड टेक? सबसे पहले तो ईगो छोड़ दो, हम्म क्योंकि ईगो है जो सबसे ज्यादा खराब करती है काम। हम्म अगर एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक करेक्ट है, दूसरा बना लो, इट डजंट हम्म मैटर। हम्म कोई फर्क ही नहीं पड़ता एज लॉन्ग हम्म एज एयरबीएनबी ने भी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, दे लॉन्च्ड इट 5 टाइम्स बिफोर इट हिट प्रॉपरली। हम्म 5 बार उन्होंने सेम प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से लॉन्च किया, इवेंचुअली द फिफ्थ वर्जन टुक इट। हम्म बट अगर वो ये सोचते कि यार लोग क्या सोचेंगे कि हमने तो एक बार लॉन्च कर दिया, उन्होंने बोला किसी को परवाह ही नहीं है, जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्या फर्क पड़ता फिर है, बना लॉन्च लेते करते हैं, रहो, फिर बना लेते दोबारा हैं। दूसरा बना लो। तो हम्म और रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी आनी बहुत जरूरी है। इट इट डजंट मैटर कि आप रेवेन्यू प्रोडक्ट के थ्रू कर रहे हो या सर्विस के थ्रू कर रहे हो। इनिशियल हम्म स्टेज में मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर्क इन हाइब्रिड मॉडल। They हम्म have a product which people are not taking it, but we using the same product they can create a service. हम्म जैसे हमारे केस में हमारा प्रोडक्ट था जो कॉन्टैक्ट नंबर देता है, हम्म but the product was not good enough for to be launched in the market or utilized in the way it was supposed to be. So we were using the same product to do एज अ projects for सर्विस। companies as a हम्म service. हम्म तो मेलचिम्प ने भी यही किया था। मेलचिम्प was a service company. करेक्ट मेलचिम्प आज की डेट में इतना बड़ा आईपीओ, इतना रेवेन्यू लेके बैठी है प्रोडक्ट के थ्रू, हम्म बट इन दी अर्ली डेज दे वर सर्विस कंपनी। और हम्म सर्विस करते करते उन्होंने वो प्रोडक्ट को स्केल किया। वंस दे वर कंफर्टेबल कि प्रोडक्ट के थ्रू इतना स्केलेबिलिटी और रेवेन्यू आ रहा है, दैट दे डिसाइडेड टू शट ऑफ द सर्विस पार्ट। हम्म सो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा आ रहा है तो आप लॉन्ग रन कर पाओगे, वो बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको तो ईगो छोड़ो के प्रोडक्ट के ही थ्रू करना है, इट्स फाइन। अगर हम्म आप सर्विस के थ्रू 2 लाख रुपए का कमा पा रहे हो महीने का, तो हम्म आप वो करो। एटलीस्ट आप सर्वाइव करोगे, आप लॉन्ग रन में कर पाओगे। हम्म there is a one common question which comes out to be that could be the end of the communication. uh, बहुत सारे जैसे जो लोग बिजनेस में जा रहे हैं, स्टार्टअप में जा रहे हैं, तो देर इज अ मिसकंसेप्शन बिटवीन डूइंग अ बिजनेस एंड डूइंग अ स्टार्टअप। I've seen a lot people say I am doing a startup and they eventually take that as a business कि मुझे मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एंड स्टार्टअप एंड बिजनेस इज डिफरेंट टू डिफरेंट थिंग्स आई बिलीव। आप क्या बताते हैं इस पे? हाउ डू यू सी इट? बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, बिजनेस इज समथिंग दैट यू invest something 100 rupees, you earn 150, you did business by end of the day, by end of the week. But startup is something very different in that arena. How do you see that thing, to distinguish between? इस पे ना बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है पॉल ग्राहम का, पीजी हम्म वाई कॉम्बिनेटर। तो हम्म उन्होंने भी इसके ऊपर डिफरेंस बताया है कि स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फर्क है। हम्म सो उनका कहना है कि यार बिजनेस तो रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, ठीक है। हम्म और उसको आप स्टार्ट करते हो, आप उसको रन करते हो अच्छे से। आपकी जो पान की शॉप है वो भी बिजनेस है, बट हम्म उसको स्टार्टअप करना बहुत मुश्किल है।
Right. Startup are essentially the one that have a capability to grow exponentially or create a mass product, change the paradigm of an industry. पान की दुकान खोलने से मेरा paradigm change नहीं होने वाला, Right. you know. But once you take it, the fundamental of a pure product as such, अगर आप उसी पान की दुकान को ये सोचो कि इसको मैं कैसे ब्रांड बना के 1000 पान की दुकान खोल दूं, पान वाला .com type, then it That's a great idea, becomes, actually. so then it becomes a product at scale. It becomes a different architecture altogether. Right. So business, obviously, at the end of the day, सबका फंडा तो वही है, पैसे कमाना, पैसे प्रॉफिट। कमाना, at the end of the day, प्रॉफिट। सबका काम तो वही है, बट कौन किस तरीके के सोच के पैसे कमा रहा है, बस फर्क उतना ही है। I think we are about to end this conversation. It was nice, and a few of the pointers that I understood personally from your perspective, which definitely gonna help me. But right now, what I am doing is not simply, it's a service-based company, which is not a product. But eventually, I would, love to interact with you again if I need any which way to convert it, because from the long time I was thinking to convert in a product company, and definitely I would love to interact with you on that pointer, how we can look into it. और चीजें, बहुत सारी चीजें निकल के आई यहाँ पे। आई थिंक जो भी हमारे कनेक्शंस हैं, बिकॉज मैंने देखा है कि जब से मैंने काम शुरू कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, हमारे जितने भी कनेक्शंस है वो सिर्फ एक ही चीज को लेके सबसे ज्यादा वरीड है। इफ दे आर लुकिंग आउट फॉर जॉब, इफ दे आर लुकिंग आउट फॉर बिजनेस टू स्टार्ट, they are not, I think, encouraged by people who are not that big, because इंस्पिरेशन उनसे आ जाती है जो जिन्होंने या कहीं जाके बोल रहे हैं या फिर जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वाई वी आर नॉट एक्चुअली, आप अगर रेवेन्यू कर रहे हो, कम रेवेन्यू कर रहे हो, तो द पीपल एक्चुअली, अगर मैं देख रहा हूँ 100 करोड़ वाली कंपनी है और मैं जॉब कर रहा हूँ 50,000 का, तो मैं कहूंगा मेरे को क्या ही मतलब है देख के इसको। बट वेन यू सी कि एक बंदा जो 10,000 15,000 रुपए कमा रहा है और वो आप 2 करोड़ कमा रहा है, विच इज आई थिंक डाइजेस्ट होने लायक चीज है। वो स्टोरीज बहुत ज्यादा हिट करती है पीपल हु एक्चुअली डोंट डेयर टू ड्रीम और लेट्स से टेक अ स्टेप। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वाई, बहुत सारे लोगों का वाई बहुत टाइम से क्लियर होता है, बट दे कैन नॉट कम अप बिकॉज ऑफ लेट्स से फाइनेंशियल सिचुएशंस और many other causes as well. But that one talk is required, and then one picture, I would say reflection is required from the society, जो कि शायद उन्हें बदल सके। And I think from that aim I started how to crack, where I aim कि कोई भी जिन्होंने कुछ किया है, कुछ बनाया है, कुछ चीजें करी है, how probably, from very low level to high level, probably जो भी तरीका है, कैसे you can take a step. And that's what my main focus and agenda was, to have this podcast with you. And eventually